I welcome all in our this webinar, whereby, as per the notice, you all be aware of it. There has been a very recent judgment of NCLT, whereby they have said that in the case of home buyers, even if cash receipt is given, then that can be treated as a claim. Let's wait for 3-4 minutes because people do take some time in joining. After that, we shall start the webinar. Just wait for 3-4 minutes. नीलेश जी आपने ज्वाइन कर लिया, वेलकम प्लीज. Hello. Good afternoon. गुड आफ्टरनून नीलेश जी, गुड आफ्टरनून. मैंने स्टार्ट कर दिया था, मैंने कहा 2-3 मिनट वेट कर लेते हैं. लेट मोर पीपल ज्वाइन. Okay. Yes. You can start deliberations. You can start, normal talk. Correct. So we are going to deal with this, the recent judgments which have been there. One, I think, which has been delivered by Chennai NCLT. Chennai NCLT, and I think NCLT also has issued some judgments. No, NCLT has not shown anything here. It is only the NCLT. अच्छा, NCLT का तो अपना रेगुलर है, I think है कुछ judgments जिसमें they have not accepted the cash portion as this one. वो है. बेसिकली हम लोग जनरली जो हम लोग लेते हैं, हम जनरली सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट्स को लेके उन्हीं के ऊपर ही डिस्कशन करते हैं. जैसे कि हमने लास्ट टाइम हमने डिस्कशन करा था, एक बड़ी इंपॉर्टेंट सुप्रीम कोर्ट की नोएडा अथॉरिटीज के ऊपर तो जजमेंट आई थी. बट आर एसोसिएशन थॉट ऑफ टेकिंग दिस एनसीएलटी जजमेंट बिकॉज इट हैज अ वेरी वेरी हाई रिपरकशंस, not only from the point of view of RPs, but from the point of view of home buyers also, and from the point of view of the CD also. And secondly, it has very heavy repercussions as far as taxation things are concerned. Our honorable NCLT has considered perspective from IBC angle only. But the moment you submit cash claim, the moment you, as an RP, root through this particular cash claim, it has a lot of repercussion on the taxation also. Hence, that is why we thought of, taking it there. Yeah. A webinar. Another reason for that is that if we see a total number of NCLT cases, around 30% relates to the home buyer, and this figure is quite predominant in case of our NCR Delhi. नोएडा गुड़गांव तो भरा पड़ा है ये होम बायर्स के केसेस है. And we as an RP, most of the RP who was active in this field are quite or get enrolled in all these home buyers cases. And जैसे ही ये जजमेंट आई तो मैंने अपने जिस होम बायर्स का केस मैं कर रहा हूँ तो मैंने उनके साथ शेयर करा. तो मोस्ट ऑफ द होम बायर्स, इफ नॉट मोस्ट ऑफ द बट मेनी ऑफ द होम बायर्स वर देयर जिन्होंने कैश एलिमेंट दिया हुआ था अपने क्लेम के अंदर, बट दे डिड नॉट क्लेम इट. No, the earlier law was also like that कि cash element को was never taken, was never considered for forming of the claim. Similarly, if you remember जो हमारा last webinar हुआ था तो उसके अंदर till that honorable Supreme Court judgment it was very much clear कि आपका जो claim है और जब तक proper claim form के अंदर नहीं है आप उसको accept नहीं करोगे. लेकिन ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने नोएडा अथॉरिटी के जजमेंट में कहा कि you must see the proof rather than the form in all these cases. For IPs, accepting or not accepting a claim has a very very high repercussion in our IBC proceedings. तो इस तरह के क्लेम के ऊपर जब कोई भी ऐसी बात आती है तो we always try to enlighten each other so that we can understand what repercussions it has with other things and there. Only with that objective, we thought of considering this NCLT judgment. और जैसा कि नीलेश जी ने कहा कि NCLT की जजमेंट इसके अगेंस्ट है, बट ये जजमेंट जो फेवर में आई है, although from IBC angle it might be good, but we look into it from other angles also because we are RP. RP means registration professional. We need to resolve everything not only from IBC angle but from all other angles also.
तो नीलेश जी आप जरा प्लीज हमारे बलदेव जी हैं ये हमारे आज के स्पीकर हैं तो प्लीज गिव हिज इंट्रोडक्शन मिस्टर नीलेश शर्मा इज आवर वाइस प्रेसिडेंट and I request everyone else to also open up their video so that that looks good and slowly and steadily people will be joining us and Nilesh ji please start the proceedings and then we move forward. Okay. So welcome everyone. So as you are aware that our today's topic is cash payment claims by home buyers, and all of us who are acting as insolvency professionals, and especially if we are handling any home buyers matter or real estate matter. So I think all of us must have handled this type of a situation where a claim has been received, where the claimant is claiming that he has made some cash payment. So in that type of a situation, what is to be done by the insolvency professional acting as IRP, RP, or even liquidator? So that our today's webinar will be guiding you with this particular aspect. And not only that, we are having our expert, Mr. Mr. Baldev Raj, CA, Mr. Baldev Raj, who is having huge experience in income tax matters. And I will give him give his brief introduction to you. In addition, we are having Mr. Manoj Kumar Anand. So you are already aware that he has been the president of this IPA association. So he will be updating us with recent IBC developments, and then whatever with respect to this particular topic also, he will be guiding us, he will be briefing us as to what have been the judgments and what should be done. So before starting that, let me give a brief introduction of Mr. Baldev Raj. He has been a chartered accountant in practice with direct tax as the core area from 3 decades in the name of Baldev Raj and Company Chartered Accountants. He has vast experience of handling direct tax issues of domestic and international clients and representing them before the appellate authority in NCR of Delhi and other locations, associated with Institute of Chartered Accountants of India, ICAI, and other organizations, invitee in Fiscal Law Committee, Direct Tax Committee, Committee on International Taxation of the ICAI, technical director or joint convener of annual direct taxes workshop organized by the All India Chartered Accountants Society at India International Center since 2007 onward, delivered lectures and presented papers at NIRC of ICAI, CIRC of ICAI, and various study circle of NIRC, other professional forums, BARA associations and NGOs, served as president of Bharatiya Vitt Salahkar Samiti Society, BVSS, a forum of financial professionals in calendar year 2015 and 16. Presently member of advisory board of BVSS and special advisor to the International Taxation Group, author of BVSS publication on TDS and FEQ on income tax provisions post-COVID 2019. So welcome, Baldev Rajji. I think our audience will be immensely benefited with your huge experience in this particular field. Before that, I will request Manojji to brief us about this today's topic and tell us as to what developments have been there in this relating to IBC matters and especially with respect to this today's topic. So over to you, Manojji. Thank you very much. Thank you, Nilesh ji. Basically, since we people are core IBC practitioners, and as a result of which our audience, is more excited to join us when some IBC topic is there. Maybe because of that reason, we included it as a taxation topic. People may be joining us later on. In any case, we start with. I start my deliberation with my, PPT. I'm just sharing my PPT, please. Just hold on. Let me, share my proper PPT with you.
I'm just taking some time. Just bear it with me because oh, I'm sorry. Just wait for some time because I'm not able to connect proper PPT with you. I'm just connecting. Yeah, I think now my PPT is visible. Hopefully. सॉरी kept you waiting but वो कोई टेक्निकल इशू आ गया था तो म्यूजिक जो मैंने स्टॉप किया हुआ था वो अननेसेसरी दोबारा क्रीप इन हो रहा था चलिए आई होप नाउ एवरीथिंग इज क्लियर टुडेज आवर टॉपिक इज analysis of cash payments claims by home buyers recent IBC 2016 developments and possible repercussions under income tax act. This is our small introduction which we do take generally. These are the webinars we've been holding on in our IPA platform, and for that we provide the YouTube link also. If any one of you, it is basically on the latest topics only, and if any one of you would like to hear or learn anything and would like to go back to it, he can subscribe to this YouTube channel. For example, on 14th of March we took latest Supreme Court judgment. Today we are taking a cash payment judgment, and this is a YouTube link. Everybody can go there and have a look on these things there. Okay. एक हमारे यहाँ पे ट्रेडिशन है कि आई डू टेक अप समथिंग लेटेस्ट इन टॉपिक. तो लेटेस्ट जो पिछली हमारा लास्ट वेबिनार हुआ था उससे लेके अब जो आज का वेबिनार है उसके 15-20 दिन के बीच में जो भी कोई एक इंपॉर्टेंट बात होती है तो आई डू टेक अप देयर. तो वी पीपल insolvency professional people are really worried about the show cause notices, and we have a lot of grudge that we are being held guilty without proving us to be a guilty. तो ये जो शो का एक बड़ी अच्छी ऑनरेबल बॉम्बे हाई कोर्ट ने एक जजमेंट दी है which is related to the show cause notice only. I'm sharing it with you. On 4th of April 2024, a divisional bench of Honorable Bombay High Court comprising Justice so and so gave this judgment. The case name was Amit Gupta versus IBBI and others. What broadly it observed? It broadly observed that IBBI must examine the serious effect of the issuance of show cause notice to any IP. The very issuance of a show cause notice has the effect of stopping the IP from taking up any new work by reason of bylaws 23A of the model bylaws that are statutorily specified in the schedule of so and so. The authorization assignment shall stand suspended upon initiation of disciplinary proceedings by the agency or by the board, as the case may be. While the aforesaid provision is not under challenge before the court take judicial notice of the serious repercussions on IPs when the IBBI issue a show cause notice. The moment disciplinary proceedings are initiated, the IP's authorization to conduct his assignment stands suspended. Such a position enabled by subordinate law can have serious repercussions on the IPs. The position may also have the effect making the IBBI reticent to issue show cause notices, considering the debilitating impact it can have on IPs. तो आगे मैं इसको जरा एक बार देख रहा हूँ. The situation deserves to be reviewed by the IBBI. ये इन्होंने अपने पेज 81-82 के अंदर ऑर्डर के अंदर लिखा है.
तो कहने का मतलब ये है कि वी पीपल वी आईपीज आर ऑलवेज क्राइंग कि हमारे को जो शो कॉज नोटिस है वो जब तक हम गिल्टी ना फाउंड हो तब तक नहीं इशू करना चाहिए, बिकॉज द मोमेंट शो कॉज नोटिस इज इशू टू द आईपी, जो भी उसकी प्रेजेंट असाइनमेंट्स होती है उसके लिए उसको वापस सीओसी के पास जाना पड़ता है, उसको बताना पड़ता है कि भैया मेरे को ये शो कॉज नोटिस हुआ है, इशू है, वेदर यू विल लाइक टू कंटिन्यू विद मी और नॉट। और रही बात नई असाइनमेंट का, वो तो ले ही नहीं सकता। और जब तक ये शो कॉज नोटिस डिस्पोज ऑफ होता है तो वी इट टेक्स 5-6 months or maybe more time, till then he is handicapped of doing any work as an IP. We at association level are always crying. Although IBPI is taking a lot of care for the IPs, they have been issuing very regular amendments, clarifications by way of amendment in the regulation. But this particular aspect, we are really worried for that कि हमारे आईपीएस को ऐसे ही किसी की कंप्लेन पे एकदम कोई शो कॉज नोटिस इशू कर दिया जाए, तो दैट इज नॉट डिजायरेबल। तो ऑनरेबल हाई कोर्ट ऑफ बॉम्बे ने ये इस चीज का कग्निजाइज लिया, और वो भी इन्होंने सुओ मोटो लिया, मीनिंग देयर बाय कि दिस पेन फर्स्ट टाइम हैज बीन रियलाइज्ड बाय द हाई कोर्ट, बाय एनी ऑनरेबल हाई कोर्ट, एंड आई थॉट ऑफ शेयरिंग विद माय आईपी ब्रदर्स। तो उन्होंने ये कहा, ऑनरेबल आई एम नॉट रीडिंग दिस पर्टिकुलर जजमेंट, आई एम रीडिंग ओनली टू द एक्सटेंट की वेयर बाय दिस बेनिफिट हैज बीन व्हाट कग्निजाइज दे हैव टेकन सुओ मोटो as far as show cause notice issuing is concerned to the IPs. Honorable Bombay High Court deleted the para 2.1 and 2.5 on the ground that they introduced substantive amendments to statutory legislation, even by purporting to be mere clarification, that the changes may seek to bring in or not even covered by the IBC and the LP regulations. LP mean liquidation process regulation. Due process by way of compliance with the statutory requirements of the lawmaking regulation is missing. Basically what happened that liquidation process एक नोटिफिकेशन आईबीबीआई ने इशू करा था, तो इस पर्टिकुलर केस के अंदर उस चीज को चैलेंज करा गया। तो उस चीज को चैलेंज जो करा गया, दो पार्ट्स के अंदर हाई कोर्ट ने रिलीफ दी। एक तो मैंने अभी आपको जो सीओ मोटो बात बताई वो, और दूसरी उन्होंने ये कहा कुछ उसके पैराग्राफ से 2.1 एंड 2.5 दीज पर्टेन्स टू लिक्विडेशन फीस, कैलकुलेशन ऑफ लिक्विडेशन फीस, इसको उन्होंने अल्ट्रा वायर्स हेल्ड कर, उन्होंने कहा जी दीज आर एक्सीडिंग इन नेचर, because regulation is always subordinate to the court, and a regulation can clarify something, anything what is stated in the court, but it can't exceed the provisions of the court. And on that basis, they, this is their result. Therefore, point number 9, I read it technically for you. Therefore, in the course of conducting the quasi-judicial proceeding, IBBI is a quasi-judicial authority. The IBBI is prohibited from placing any reliance in paragraph 2.1 and paragraph 2.5 of the impugned circular in determining if any fees charged by the petitioner in the liquidation assignment in question was in excess of the permissible limit. Second thing they have also, taken cognizance is that many a times IBBI issues for the same cause multiplicity of notification, show cause notices, and they have, come very heavily on the IBBI on that particular aspect also. They said multiplicity of proceedings on the same cause of action before the same regulator against the same notice on the same fact is inappropriate. हाँ जी ममता जी, हेलो, हाँ हाँ जी, क्या करें आप? ओके ओके, कर लिया, मैं चालू कर दिया, ओके ओके, कर लिया, ओके। Sorry, one of our co-host was called up and said that we continue. Okay, that was there. So multiplicity of proceeding on the same cause of action before the same regulator against the same notice not there. However, Honorable the Bombay High Court was not absolutely bent on the feelings of the IP. They held paragraph 2.2, 2.3, and 2.4, the upheld the contents of paragraph 2.2, 2.3, and 2.4, saying that it is clarificatory in nature and illustrative in nature. तो एक ये मेरा आप सब लोगों के साथ एक शेयर करने वाला था कि एटलीस्ट जो हमारी पेन जो हम लोगों को है एक बहुत ज्यादा, तो एटलीस्ट ऑनरेबल बॉम्बे हाई कोर्ट ने इस चीज को रियलाइज करा।
और वो भी इन्होंने सीओ मोटराइज करा, तो आई थॉट दिस इज द लेटेस्ट न्यूज फॉर अस। एंड अच्छा, इसके बाद जब मैंने ये इसकी ये पीपीटी तैयार करी, तो इन द एट द सेम टाइम आई कम अक्रॉस टू मोर न्यू थिंग्स देयर, one from the Chennai High Court. What happened that in this case, I'm not sharing my whole case. In this case, IBB suspends IRP for sharing asset memorandum with the prospective bidder by order so and so. Our Honorable Madras High Court held that automatic suspension of IPA during disciplinary proceeding is fair. If we evaluate it with our Bombay High Court judgment, it is a little bit unfair on us. But I thought कि अगर मैं आपके साथ ये share नहीं करूँगा, तो on my part it will be unfair on you also. Although this क्या कहते हैं, जो केस था ये 22/1/2024 को प्रोनाउंस हुआ था, लेकिन जो प्रेस के अंदर आया, रीडी लॉ के अंदर आया, ये 11/4/24 को ही आया। तो डिटेल अगर आप इस केस के बारे में जानना चाहें तो आई हैव गिवन द लिंक, यू कैन गो थ्रू इट देयर। So it was, a little bit, if you call it in the spirit, it was against what Bombay High Court said. In any case, we need to live with it. Okay, now let me, that was my, initial start of the things there, कि जो एक अपडेट था हमारा पिछले 15-20 दिन के अंदर, जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट अपडेट होता है, हम सिर्फ उसी को कंसिडर करते हैं। तो आई हैव शेयर्ड इट विद यू। नाउ लेट मी कम टू द माय मेन टॉपिक टुडे। in this main topic we have part 1, part 2. part 1 के अंदर जो एनालिसिस ऑफ कैश पेमेंट्स क्लेम्स बाय होम बायर्स, पहले हम इसको जो आईबीसी की एनसीएलटी की जजमेंट है, वी शैल लुक इनटू इट कि उन्होंने किस बेसिस पे इस जजमेंट को कंसिडर करा। जैसे हमारे नीलेश जी अभी कह रहे थे कि क्या नाम इसका, एनसीएलटी ने ऑलरेडी इन चीजों को ये हेल्ड करा है कि कैश पेमेंट्स को आप नहीं ले सकते। बट व्हेन एनसीएलटी टुक दिस जजमेंट, and naturally they might have also come across many of similarly contrary judgments with them, but despite contrary judgment they have taken this judgment and adjudicated the matter. That was a really something surprising कह लीजिए आप, something which I thought of sharing with my insolvency professional brothers. अब ये एक पहलू तो इसका हो गया जो कि आईबीसी एनसीएलटी ने इस चीज को अपहेल्ड करा। कैसे करा, क्या करा, अभी मैं आने वाली कुछ स्लाइड्स के अंदर आपसे शेयर करूंगा। लेकिन सिंस वी पीपल, although for the last 5 years we were doing insolvency practice, but before that for the earlier 25-30 years we are doing the taxation practice. The moment cash element came into picture for home buyers or for IPs or for CDs, तो एकदम हमारे दिमाग के अंदर ये बात आई कि यानी कि it will have a lot of it may or may not have some repercussions in tax also. And just to know what repercussion it will have in the tax, we invited our respected Baldev Raj, who's an eminent speaker on taxation. तो मेरी ये slides खत्म होने के बाद he will also be enlightening us कि इस तरह की transactions के अंदर tax के क्या repercussion हो सकते हैं from home buyers angle, from corporate debtors angle, or even from the auditor's angle also under relevant sections of the income tax act. तो चलिए सबसे पहले मैं स्टार्ट करता हूं कि ये हमारा ये जो पर्टिकुलर जजमेंट आई है, ये नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल की चेन्नई बेंच की जो जजमेंट आई है, व्हाट दैट पर्टिकुलर जजमेंट सेज इन नटशेल। it is with reference to K. Mutha versus RP of Ambogini Property Developers Private Limited. Anybody wants to read read it in detail, तो ये मैंने उसके लिए ये आईए नंबर वगैरह भी दे दिया है। ये 4 अप्रैल 2024 को करी गई थी। Intentionally I have written in detail the name of the judges, quorum, because I salute to them that despite contrary judgments of the higher authorities, they have given this judgment. And if we see that this particular judgment is against the RP, RP was represented by team in front of you in person also, and the applicant was represented by simply one advocate. I salute this Mr. Amrita Satyahit also, that he was able to impress to the NCLT bench despite contrary judgment that it should be treated as a legitimate claim of his client being home buyer.
what existing law and practice was there. अगर हम एज एन आरपी अगर हम देखें तो अगर हमारे पास किसी भी कोई भी कैश का क्लेम एज एन होम बायर, अदरवाइज आल्सो, अदरवाइज तो अगर कम होते थे, होम बायर्स में ही आता था, तो हम लोग क्या करते हैं, वी नेवर एडमिट दैट क्लेम, we always admit the claim to the extent which is get correlated with the books of accounts. और कैश का तो बुक्स के अंदर होना नॉट पॉसिबल, जबकि इस पर्टिकुलर केस के अंदर कुछ होम बायर्स के कैश के क्लेम भी एक डिफरेंट वे से लिए गए थे, उनको हम अभी वी स्टडी फॉर दैट आल्सो. अब इस पर्टिकुलर जजमेंट्स को अगर हम एप्लीकेबल करें तो we should accept cash claim of the home buyers also, and many a times it runs into lakhs of rupees. जैसे इस केस के अंदर भी काफी ह्यूज लाखों में अमाउंट था. तो लेट्स go little bit deep into it. The basic facts of the case are the applicant had booked a 2 BHK apartment in the project costing rupees 82 lakh rupees and required to pay 20 lakh rupees as advance. उसने 2.5 लाख रुपए तो चेक से पे कर दिया और 17.5 लाख रुपया कैश पे कर दिया. बट मैं आपको दिखाऊंगा कि उसने जो क्या कहते हैं, जो सीडी था, उसने उसकी रसीद दी उसको ऑफ सच कैश ट्रांजैक्शन. द कॉर्पोरेट इसका जो प्रोसेस स्टार्ट हुआ था सीआरपी का 10/9/2019 को हुआ था. एप्लीकेंट ने क्लेम सबमिट करा 35,20,000 रुपए का, क्योंकि उसने कुछ पेमेंट बाद में भी करी थी. जब उसने क्लेम सबमिट करा तो आईआरपी ने उसको कोई रिप्लाई नहीं दिया. तो मैं अपने आईआरपी ब्रदर्स, अब तो खैर हम लोगों को एक्सपीरियंस हो गया, शुरू में हम भी अपनी ऐसी गलतियां बहुत करते थे. जब भी कोई क्लेम को हम रिड्यूस करें या कम एक्सेप्ट करें या एक्सेप्ट करें, तो वी शुड कम्युनिकेट विद द विद द कंसर्न एप्लीकेंट डेफिनेटली, एंड टेल हिम द रीजंस आल्सो एज पर आवर आईबीबीआई गाइडेंस कि हम इसका क्लेम कम से क्यों एक्सेप्ट कर रहे हैं. But in this case, no reply was given by the IRP. The applicant, because of this particular fault, his application get admitted with the NCLT. Why? The applicant came to understand that several members of the association had filed claims before the respondent and were waiting for the confirmation. The applicant was under the bona fide belief that her claim would also be considered and admitted by the respondent. He was having a bona fide belief because of these reasons that his claim is simply pending. It will be get admitted. Okay. On 5/1/2021, approximately 1.5 years of start of CRP, the list of admitted claim published by the RP, and her claim was admitted only to the extent of 3,77,178. बेसिकली जो 8% का रेट ऑफ इंटरेस्ट था वो उसने लगा के, जो उसने 2.5 लाख रुपए की कैश की पेमेंट करी थी, उसके बेस पे वो क्लेम उन्होंने एक्सेप्ट कर लिया, इग्नोरिंग कैश पेमेंट ऑफ 17.50 lakh. On inquiry, the RP stated that no entry in the books of the corporate debtor that it has received cash payment from the applicant for the purchase of residential units from the project. Some of the homebuyers made payments to the account of real value promoters for the project being developed by the CD. सिमिलरली ये एप्लीकेंट को छोड़ के बाकी और लोगों ने भी कुछ कैश की पेमेंट्स करी हुई थी. RP, when he came across that some cash payments has been made there, which has not been given to him by the CD or the past directors of the company, he filed a avoidance transaction application under Section 66 to the IB against the debtor, against the promoters. The estate promoter of the corporate debtor had provided an affidavit along with a list of home buyers, which provides the details of home buyers who paid in cash under the instructions of the oh, my screens here just stopped. I'm just sharing it again. Yes, I hope my screen share is now visible. The asphalt promoter of the corporate debtor had provided an affidavit along with a list of home buyers
जिसके अंदर उसने कैश रिसीव करा था कुछ होम बायर से, उसके अंदर एप्लीकेंट का नाम नहीं था। ऑलरेडी काफी टाइम हो गया था, तो रजिस्ट्रेशन प्लान वाज आल्सो अप्रूव्ड बाय द सीओसी विद 95% मेजोरिटी, जिसके अंदर इस एप्लीकेंट के क्लेम का जो अमाउंट था वो 3 लाख रुपए ही था, मीनिंग देयर बाय कि उसने जो कैश पोर्शन दिया था वो भी उसके अंदर इंक्लूडेड नहीं था। This was the, in his applicant he enclosed the receipt. तो इसके अंदर जो आई वुड लाइक टू ड्रॉ योर अटेंशन कि जो कॉर्पोरेट डेटर ने उसको रसीद दी थी, उसके अंदर ये लिखा हो उसने कि ये 20 लाख रुपया मैंने ये पे करा है इसको, विच इंक्लूड्स डिफरेंट डेट पे 17.5 लाख रुपए की कैश पेमेंट आल्सो। So this was the whole crux of the receipt, which make applicant to claim 17.5 lakh rupees cash payment from the which evidence, which this was the only evidence which make the applicant to file his claim of 17.5 lakh rupees. Now what, how are honorable NCLT adjudicated? The checks of the amount of so and so have been drawn in the name of so and so. Further, the cash receipts of 12.5, 5 lakh dated 2, 5 or 6, 5 respectively in the matter of applicant is placed at page number 12 and 3 of the 13 of the application. Amount totaling rupees has been paid by the applicant to the corporate debtor. All the checks and receipts were in the name of corporate debtor. The transaction of the applicant is not reflected in the books of the corporate debtor, and the name of the applicant is also not in the affidavit submitted by the erstwhile management before the Honorable Court of Bombay. No. The crux of the whole things, what Honorable NCLT adjudicated, Regulation 8A, Sub-Regulation 2B, Sub-Regulation 3 and Sub-Regulation 4 of the CRP regulation prescribes that the existence of the debt may be proved on the basis of other relevant documents, including receipt of payment. Receipt of payment exact word इसके अंदर use करा गया है, और Honorable NCLT took cognizance of this particular language and said that reading the CRP regulation 13 shows that the RP shall verify every claim, but there is no specific obligation upon the RP to strictly compare the claim submitted by the claimant only with the books of the corporate debtor. If the RP verifies the claim only based on the books of the corporate debtor, and if the CD does not manage its books and records properly, it would be determinantal to the creditors like the applicant. Due to improper maintenance of the records of the CD, the applicant homebuyer can't be made to suffer. The RP must verify the authenticity of the supporting documents that have been filed by the claimant in support of their claim by other means within the boundaries of the law. The copy of the receipts and the check produced by the applicant are bona fide. Copy of the cash receipt, जो मैंने आपको पहले एक receipt दिखाई, तो उन्होंने उसको एक bona fide माना और कहा कि ये applicant ने उसको पैसे दिए हैं in cash 17.5 लाख रुपए. The corporate debtor have received 20 lakh rupees from the applicant as a booking advance. Accordingly, RP is directed to admit the claim of the applicant with the applicable interest rate and include her in the respective class of creditors. With the force of direction, this application stands allowed and disposed of. तो कहने का मतलब यह है कि उस कैश रसीद के बेस पे इन्होंने ये कहा कि आप उसका क्लेम एक्सेप्ट करो. जो पर्टिकुलर रेगुलेशन था, रेगुलेशन 8, उसके बाद जो सब रेगुलेशन था, उसके अंदर उन्होंने क्लियर वे से ये डायरेक्शन दी आरपी को कि ये एक लेजिटिमेट क्लेम है, आप इसको एक्सेप्ट करो, और यानी कि जो है इस तरह से इसको एक्सेप्ट करो, बिकॉज आपको सिर्फ ये देखना है कि जो प्रूफ ऑफ क्लेम है वो कैसा है. जब प्रूफ ऑफ क्लेम इस चीज को बोनाफाइड है, ये प्रूव करता है कि 17.5 लाख रुपए उसके कैश उसने दिए हैं और सीडी ने अपनी किताबों में भी नहीं शो करे, और लेटर ऑन जब उसने एक एफिडेविट दिया बॉम्बे हाई कोर्ट को जिसमें ये कहा उसने कि ये जो है कुछ और लोगों ने भी कैश दिया होगा, उनका नाम तो उसने इंक्लूड कर दिया, एप्लीकेंट का नाम उसने उसके अंदर इंक्लूड नहीं करा. तो उन्होंने कहा जी इट हैज नो मीनिंग बिकॉज वी कांट अलाउ एप्लीकेंट टू सफर because of non-proper maintenance of the books of account by the CD, number one. Number two, by giving a wrong affidavit in the court and all this thing there. So, this was the, in nutshell, my
होल जजमेंट, यानी कि एनालिसिस ऑफ द होल जजमेंट। और अब इसके बारे इट हैज अ रिप्रिकॉशन, जो मैंने आपसे बात करी आईबीसी से रिलेटेड। अब इट विल हैव लॉट ऑफ रिप्रिकॉशन इन टैक्सेशन आल्सो, कि आप क्या कहते हैं इसको, टैक्सेशन के अंदर क्या इसके रिप्रिकॉशंस होंगे। एक मिनट, ये हमारे को बताएंगे हमारे बलदेवरा जी, हु इज एक्सपर्ट इन द टैक्सेशन। बिकॉज इन माय ओपिनियन, अगर हम लोग ये सोचें कि हमारा जो आईबीसी का सेक्शन 238 है वो क्या नाम है इसका एक्सीड करता है, तो इस करके ये जो क्या कहते हैं जो ये एनसीएलटी की जजमेंट है, इट विल प्रिवेल ओवर taxation reason. I don't agree to that. Maybe others can have a different opinion for that, because हमारे अंदर जो सेक्शन 25 है, सबसेक्शन 1 के अंदर है, आरपी इज रिक्वायर्ड टू प्रिजर्व एसेट्स, एंड इन दैट प्रिजर्वेंस ऑफ द एसेट्स ही इज ड्यूटी बाउंड टू फाइल ऑल दी मीट ऑल दी लॉज आल्सो। इवन जब हमारा रजिस्ट्रेशन प्लान आता है उसके अंदर भी हम सेक्शन 30 सबसेक्शन 2 के अंदर सर्टिफिकेट देते हैं कि रजिस्ट्रेशन प्लान इज कंप्लाइंग विद ऑल दी लॉ। तो मीनिंग देयर बाय कि वी नीड टू कंप्लाई विद टैक्सेशन लॉज, और इसके क्या रिप्रिकॉशंस आ सकते हैं। तो ये अब मैं आई पास ऑन माय बैटन टू बलदेव जी। बलदेव जी, प्लीज कैरी ऑन, आई जस्ट स्टॉप देयर। आई थिंक बलदेव जी तो नजर नहीं आ रहे, लेट मी कॉल हिम। अगर मेरे जो मैंने बात करी है, जब तक बलदेव जी को मैंने फोन करा है, तो कुछ इसके, बलदेव जी आप हो नहीं क्या, स्टार्ट करो आप अपनी वो। अच्छा, कर रहे हो आप? हाँ, मेरा खत्म हो गया, मैंने आपको इनवाइट करा था तो आप थे नहीं। हाँ जी, हाँ जी। वो बलदेव जी कह रहे हैं कि उनका कोई नेटवर्क का इशू आ गया था जिस करके वो डिस्कनेक्ट हो गए। तो वी कैन डिस्कस टिल द टाइम ही जॉइंस अस। ही इज आस्क्ड फॉर द 1-2 मिनट। शिवनंदन जी नमस्कार। आप अपना वीडियो, सब लोग अपना वीडियो ऑन कर लेना, तो अच्छा लगेगा सुनना। और हमारे साथ शमशेर बहादुर सिंह जी भी हैं। चलिए बलदेव जी, आई थिंक ही इज एबल टू गेट कनेक्टेड। तो नमस्कार शिव नंदन जी, आप बताइए, आपके पास कोई और फिल इन द गैप वाली कोई बात हो इंसॉल्वेंसी प्रोफेशनल्स के लिए, प्लीज शेयर। ही इज आवर वेरी सीनियर फेलो इंसॉल्वेंसी प्रोफेशनल। No, I think that this judgment is a good one, but it will open a lot of Pandora boxes, because if the cash has not gone into the company books of accounts, then it will be a very difficult situation. See, that is what is going to be. And then at the end of the session, we can have discussion on this issue. Okay, okay. Baldev ji, please carry on. Start your deliberation. Sorry, there was some network issue. Thank you very much, Manoj ji, for inviting me on this crucial and important which we have chosen for all the practitioners. May I start with sharing my slides? Yes, please. Is it visible, Manoj ji? Absolutely visible. आपकी आवाज भी क्लियर है और आपकी स्लाइड्स भी विजिबल है। प्लीज कैरी ऑन। Thank you, Manoj ji. Manoj ji has already briefed about the case law which we are discussing about, and my scope of discussion will be only limited to the tax implication of this transactions, which we need to be as a professional should take care of while performing our duty. This transaction, which I could understand from the Manoj as well as the case law, is three parts are there. Cash payments are there, made by the home buyer
to the developer company or promoter of the company for booking of the residential flat unit, and developer company and promoter of the company issue a receipt to the promoter, home buyer, and this amount has not been recorded in the books of account. That's a basic issue is when there is not recorded in the books, what will be the implication of the moreover when this claim has been accepted through the NCLT as per the order by the RP. Now these three parties which I could understand from this will be effective. The developer company, which is as a professional we are taking care of in our professional work, and the home buyer who is declaring is that they have paid the cash. What is the impact on that party also is there. And the third is the auditor. Auditor is who has to do the audit of the current year when this admission has been taken of the cash receipt from the buyer, and what will the implication that auditor has to be taken care of. This is not the topic of my today of the auditor. My topic is very limited to the tax part only. The authorities which are more concerned about this is a company law, which is auditor as well the company law will how it take the effect of this cash transaction when it is not recorded in the book. What will be the implication? We are not concerned today discussion, but it is very much important part. We should take care of that. Second is the income tax, which we have a concern and we are going to discuss with today. And the third part, which I could gather is from this is a GST import. GST is also important part on this when the buyer is booking the unit, and the GST is also applicable on the payment. So this angle has to be reviewed while you are charging your duty. Now we have come to the income tax part, which is assigned to me. There is a two-portion parties which we are discussing about today is the developer company, and second is the buyer who has booked the flat. What is the implication in the hand of the developer company, and what will be the implication in the hand of the buyer? We will discuss one by one. This is a developer company and then the home buyer. Two are there. Developer company. Now, what is the position is this is an unrecorded amount in the claim. There is no claim in the books of account. Now, what will be the implication whether it has to be recorded in the books of account? One, we are admitted, the IP has to see whether this amount has to be counted in the record, or whether it not to be recorded in the books of account as well accepted the claim. There may be a two proposition only, whether record the transaction or not record the transaction. And it has to be take a call. If it is recorded, then whom to be debited? To whom you have to collect the money. Credit in no doubt has to be given to the home buyers in the books of account. But what is not recorded, to whom it has been debited to whom? Definitely the person who has collected the money. He is a director or a promoter. To whom we have to debit and the money has to be recovered if it has to be recorded. Now, then the implication in the hand of the person also will be important part has to be reported under the Income Tax Act also. The director and the promoter who has collected the money and kept it in his own hand on the using this money as a trustee. He's a trustee, but he's using the money of the company in the hand. This is also one of the angle which has need to be addressed also. And if not recorded in the books, claim accepted. Whether it is a right thing not to record it in the books, what will be the issue? As a true and fairness of the account, liability of the account, auditor point of view, this angle has to be seen from the accounting point of view. This is not the scope, but it is just to highlight it my part. What will the income tax amount is? This is, you see this money which is received is by the company. Developer company is in the during the normal course of the business. When it is received in the normal course of the business, that money is always a business receipt. There is no doubt at all. But even though it is not recorded, even has to be recorded, then it has remain the color will be remain same. It is a business receipt. The amount, check amount is the book reported as advance. Now the books has to be recorded or not recorded. Now it has to be recorded.
So we have to record it as advance or booking amount. Now the question here arises: the normal course of the business is a business receipt and it's advance. Even when it is advance, whether it is subject to income tax, any money which is in advance, how it is a change the color, it is a become income or not income. Then it has to be seen from the angle of the accounting policy being followed by the company. Company कौन सी policy को follow कर रही है, वो policy has to be applied. We have to test this whether it is an income or not income. Company की policy क्या हो सकती है? It may be AS7 is a construction contract also where there is a method are there. Income has to be recognized on the method of percentage of completion method. If company is following that method, completion of method, then the income has to be recorded or has to be checked from that angle, or the income has to be recording accordingly through the method of accounting being followed by the company, as well as the income tax consistency being followed by that company. इस साल में नहीं, पिछले सालों में कैसे उसको रिकॉर्ड किया है उसी हिसाब से करेंगे. वो इनकम किस साल की बनेगी, किस साल में पैसा आया था, उस साल में अगर रिकॉर्ड होते तो इनकम कैसे बनेगी, that has to be recorded in that manner only. So the income also be recorded in similar manner. This is a broader is that income has to be recorded, not recorded. Money has not recorded, whether it become an income. Become in which year? A year of receipt? No, it is not year of receipt. It has to be checked from the accounting policy. The policy being consistently followed by the company over the years and still followed it. On that basis, income has to be recognized. On that method only, the income is whether included or escape of income. It has to be tested from that angle only. But department is normally taking the other way around. Department is taking other way around. They try to tax that amount under section 69A of the income tax act. But that section is taking talk about this, where any nature or source of the acquisition of money owned by the assessee, ऐसा नेचर और सोर्स जिसके बारे में मनी बिलियन वगैरह इसका एक्सप्लेनेशन नहीं है, or explanation has been not satisfactorily explained, then the value of such money or value of article not recorded in the books account may be deemed to be income of the assessee. If you see the second limb of this definition of income, that is saying is deemed to be income when not recorded in the books account. But its first limb says nature and source of that is not clean. Here the cash is in the books to be there. Company is the owner of that cash. Which source and nature is very clear. Source is that the buyer has given the booking, and the money is the source is the buyer, home buyer. So the home buyer has given the money. Source is clear. Nature is very clear. Has given the advance in the case of cash, but it is not recorded. So all the cumulative conditions are not been fulfilled. As per the provision, this section is not applicable. But department is normally invoke this provision and try to charge the tax to the assessee in this case. And why they are charging in the normal practice is this: they are charging this, and as well as they are also trying to tax in higher rate. This is one section 115BE in the income tax act. In that section, there's a higher rate of taxes there that, if you remember, that section has been inserted long back, but the rate has been higher in the case in the years financial year 16-17, when the demonetization of the money is there, notes are there, and the Mr. Modi government has introduced this higher rate of tax, 60% of tax rate. So department trying to catch this. As a IP, we should very careful about this. If the department may catch this, so we have to take care of. This is maybe the liability may arise under this section, department point of view. Now, if this is the case, what will the department normally may do? Because the income balance sheet has already been filed earlier year, you are already filed the return. Income tax return assessment may be already completed in those years. Now, what is the recourse available with the department and the assessee? There may be two things are there. There are reassessment proceedings are there from the hand of the department. Department has a one reassessment proceeding under section 148A.
initiating that proceeding, then that department gave a notice to the SSC company. Okay, these are the information with them. On their basis, their income has not been recorded in the books account, and the department just want to reassess the income, and it has been, why not it has to be treated as a escapement of income. That proceeding, the department start the reassessment proceeding against the company and try to tax company on those years in which this income is belongs to and relate to. And there are limits are there. When there is quantum is there is a 3 years from the end of the assessment year. किसी फाइनेंशियल ईयर में जहाँ हुआ उसके असेसमेंट ईयर सब्सिक्वेंट ईयर को असेसमेंट कहते हैं. Assuming फाइनेंशियल ईयर 23-24 तो असेसमेंट ईयर 24-25. तो असेसमेंट के एंड ऑफ द असेसमेंट ईयर से 3 साल तक when there is 50 lakh and above less than amount is the department can proceed further and reassessment can be there. If it is more than 50 lakh rupees up to 10 years, department can reopen the cases and reassessment can be. This is to be take care while finalizing and taking care of financials and liability. That liability may arise once IP has accepted this cash transaction. This contingency liabilities may be arise in future when the department take reassessment proceeding under section 148 against the company, and liability not only a tax part is there are interest and penalties also there. So this we have seen the income part as per the books of accounts are there. Income is relating to commercial receipt is a business receipt. Assessment may be reopened on the basis of that. The one, if it is reopened, then penalty is also there for not including in the income there. Tax and penalty, which we have talking, there may be a tax, interest and penalty also. Tax part is a normal tax rate will be applied as the company may be. It may be a 15%, 22%, 30% as applicable to the company, 25% of that years which return has already filed. And relating to interest part, interest is the delay in deposit of tax from the day it has been due to the date it has been deposited. The interest is 1% on that liability will be arise. And third part is the penalty. Penalties for the section 271C is up to the year 16-17 assessment year. That is penalty is 100% the tax amount. If there is a department imposed on the basis of there is a concealment of income and inaccurate cutting. आपने जो रिटर्न दी है वो ठीक नहीं है या जो भरी है वो पे छुपाया गया. ये दो कारणों से अपील पेनल्टी लग सकती है. That penalty can be 100% or it may be extended to 300%. But thereafter, up to the March 1670, this law was there. Thereafter, the law has amended. Then the section 270 from 270A has been introduced. From 1718, there are two parts are there, under reporting and misreporting of income. हमारे को ये देखना है कि वो मिस रिपोर्टिंग है अंडर रिपोर्टिंग है, उस हिसाब से टैक्स की पेनल्टी 50% ऑफ टैक्स और मिस रिपोर्टिंग के लिए 200% ऑफ टैक्स. बट ये पेनल्टी हमेशा लगेगी ऐसा नहीं है. There may be a reasonable cost when there is a penalty should not be imposed. But in our case, the case which is in our hand, when the cash has been received but not recorded and not returned, it may, I personally feel it is very difficult to establish this. There is a reasonable cost to not include this one. This is a part from the company point of view. Then it is income part of view. Now the transaction point of view. There also a penal provision on the basis of penal provision are there on the basis of transaction taken place. There are section in the Income Tax Act which is cash try to tag the penalty, provide the penalty where the cash transaction has been there to club the and control the cash transaction. There are provisions are there, payment of cash is there, where cash payment is there for expenses or a capital. There is allowability of expenses are there. And moreover, when these type of transaction which we are discussing about, these specific sections are also there. These are firstly the 269 ST, the Special Tax Act as this section has been introduced, where no transaction above 2 lakh rupees can be
be in cash other than the if it is cash, then this penalty is there, clause is there. 2 लाख से ऊपर कोई भी ट्रांजेक्शन एक दिन में या सिंगल ट्रांजेक्शन अगर होती है अदर देन द पेमेंट कैश चेक बैंक ड्राफ्ट इलेक्ट्रॉनिक means there is a cash transaction, there is a procedure of provision is there of imposing a penalty. पेनल्टी की बात करते हैं, पेनल्टी कितनी लगती है? पेनल्टी लगती है जितना अमाउंट कैश में रिसीव हुआ है उतने अमाउंट की इक्वलेंटली पेनल्टी लग सकती है। जितना अमाउंट कैश में आया 2 लाख से ऊपर का, 2 है, 3 है, 5 है, तो उतनी पेनल्टी लग सकती है। अगर 2 से कम आया हुआ है पर्टिकुलर ईयर में तो आप कह सकते हो पेनल्टी नहीं लगेगी। ये तो नया सेक्शन था 1/4/2017 से। उससे पहले भी एक सेक्शन था जिसमें ये बोलते थे देयर इज अगर लोन और डिपॉजिट कोई लिया हुआ है वो 20,000 से ऊपर नहीं होना चाहिए, और उसके साथ एक ट्रांजेक्शन थी स्पेसिफाइड सम मास। स्पेसिफाइड सम था जो हमारी प्रॉपर्टी से रिलेटेड ट्रांजेक्शन है उसके लिए पैसा एडवांस लेते थे या बुकिंग अमाउंट लेते थे, उससे रिलेटेड था कि अगर वो भी 20,000 से ज्यादा अगर लिया हुआ है तो भी उसको वैलिडेट मतलब लायबिलिटी कार्ड पेनल्टी था। वो एनी अमाउंट 20,000 से ज्यादा अगर किसी साल में ले लिया और उसका अमाउंट उससे 20 तक ऑलरेडी था तब भी आपने ओवर एंड अबव ले लिया तो आपका वो पेनल्टी इम्पोज होती थी। इसमें सम स्पेसिफाइड सम को डिफाइंड भी किया हुआ है जो हमारी ट्रांजेक्शन इसमें फॉल करती है, जिसमें ये कहता है कि कोई पैसा अगर लिया है एडवांस लिया अदरवाइज तो ट्रांसफर ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी से है, वेदर और नॉट ट्रांसफर टेकन प्लेस, ट्रांसफर हुई है या नहीं उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर 20,000 से ऊपर है तो पेनल्टी लग सकती है। पेनल्टी इसमें भी उतनी थी है जितनी पहले बताई है, money which has been received equivalent to that money, the penalty can be imposed. Now there's 2 sections are the similar penalties, but penalty will be remain on one, not twice. That is clear on that. ये बात हुई हमारी कंपनी के पॉइंट ऑफ व्यू से। इतना कंपनी को क्या देखा उसकी इनकम के बारे में, इनकम का इस साल टैक्स होनी चाहिए, उस अगर इनकम टैक्स होती है तो टैक्स होगी कैसे, डिपार्टमेंट कैसे पकड़ सकता है, वो ध्यान रखना है। रीअसेसमेंट हो सकती है उसमें टैक्स भी लगेगा, इंटरेस्ट भी लगेगा और पेनल्टी भी लगेगी। फिर और पेनल्टी ट्रांजेक्शन की भी है, इनकम की भी है, अलग अलग ओवर एंड अबव ट्रांजेक्शन की भी है जो कैश में ट्रांजेक्शन भी है। अब आते हैं हम समझने के लिए बायर पॉइंट ऑफ व्यू से। आईपी को ये बायर को भी समझाना पड़ेगा कि बायर जो क्लेम कर रहा है उसकी लेबिलिटी भी अराइज होगी, क्लेम को बाद में मिलेगा, क्लेम के अलावा उसकी लेबिलिटी भी अराइज हो सकती है। ही हैज टू आल्सो बी कैच्ड बाय द डिपार्टमेंट बिकॉज ऑफ दिस ट्रांजेक्शन। वो कैसे हो सकता है, उसने कैश ट्रांजेक्शन कही और उसका वो सोर्स एक्सप्लेन कर पाया। इन 99% व्हाट इज हैपनिंग इज बायर आर नॉट बीन इन पोजीशन टू एक्सप्लेन द सोर्स ऑफ देयर, the source is not, if not been able to explain, then they are liable to pay the tax on that income also, which is use tax is there. ये 2 सेक्शन है जिसमें डिपार्टमेंट इसको कैद करता है। एक है जिसमें वो कहता है कि अनएक्सप्लेन इन्वेस्टमेंट है, जो पैसा होम बायर ने कंपनी को दिया वो एज ए इन्वेस्टमेंट दी, और वो इन्वेस्टमेंट उसने क्योंकि कैश ट्रांजेक्शन की और बुक्स में रिकॉर्ड भी नहीं किया होगा। कोई भी बायर बुक्स में रिकॉर्ड तो करता नहीं कैश को, और बायर ने रिकॉर्ड की नहीं और उसने इन्वेस्टमेंट कर दी तो वो सोर्स उसका एक्सप्लेन नहीं हो पाएगा, तो उसको उसकी इनकम मान ली जाएगी कि जो कैश उसने दी है ये पूरी पूरी उसकी इनकम होगी। मान लो वो इन्वेस्टमेंट नहीं मानता अपनी बुक्स में, उसका एक्सपेंडिचर भी मांग लेता, तो डिपार्टमेंट के पास एक वन अदर सेक्शन है 69C, वो ये मान लेगा कि इसको एक्सपेंडिचर है जो उसने बुक्स में नहीं रिकॉर्ड, उसको बुक की रिकॉर्डिंग की जरूरत नहीं है, उसका सोर्स एक्सप्लेन करना है और सोर्स एक्सप्लेन नहीं कर पाया। तो दोनों ही प्रोपोजिशन में आइदर उसकी इन्वेस्टमेंट है या एक्सपेंडिचर है, दोनों ही केस में नहीं कर पाता, तो जो स्पेसिफिक सेक्शन जो हमने अर्लियर हमने डिस्कस किया 115 BBE, उसमें ये कहते हैं कि जो इस सेक्शंस में इनकम आती है उसमें स्पेशल रेट है। स्पेशल रेट जो मैं भी हमने डिस्कस किया 1/4/17 से आया असेसमेंट ईयर से, जो मोदी सरकार जी लाए थे जब हमारा ये डीमोनेटाइजेशन का पीरियड आया था, तो हायर टैक्स रिकवर करने के पॉइंट ऑफ व्यू से इसमें अब टैक्स कितना होता है, 60% टैक्स होता है। रेट ऑफ टैक्स तो इतना है लेकिन इसकी इम्प्लीकेशन बहुत ज्यादा है। इस खर्चे के, इस इनकम के अगेंस्ट कोई खर्चा उर्चा अलाउ नहीं होता, ग्रॉस पे टैक्स होता है। और इसको समझने के लिए कितना लॉ होगा, कितना टैक्स पड़ सकता है, वो हमने ओवरऑल कैलकुलेशन करी है, वो आप देखेंगे तो इस पे क्लियरिटी आएगी। इसका टैक्स रेट है 60%, सरचार्ज है 25%, तो 25% सरचार्ज तो 60 पे हो गया 15%, 10 से 4%,
टोटल टैक्स और सरचार्ज का 3% आया, तो टोटल टैक्स सरचार्ज सेस मिला के गया 78%। मीन्स जो बायर अमाउंट बोलेगा कैश मैंने 10 लाख दिया, तो उसका 78% तो उसको इनकम टैक्स टैक्स लग सकता है। यहाँ भी उसकी जान नहीं छूट रही, इतना नहीं है काफी, इसके अलावा उसको पेनल्टी भी लग सकती है बायर को। वो सेक्शन है 10% ऑफ द टैक्स, जो 78% है उसका 10% पेनल्टी भी लग सकती है, 7.8%। और उसके यहाँ भी नहीं खत्म हुआ, उसके अलावा उसको इंटरेस्ट भी देना है, 234B का इंटरेस्ट जिस दिन उसने टैक्स जमा कराना था रिटर्न करने से आज तक का, अज्यूमिंग वो 17-18 फाइनेंशियल ईयर का एंट्री है और असेसमेंट 18-19 में उसके फॉल करती है, तो उसको अप्रैल 18 से लेके अप्रैल 24 तक का ब्याज देना पड़ेगा, जो 6 साल हो गए। 1% के हिसाब से पर मंथ के हिसाब से 72% ब्याज हो गया। तो अगर हम टोटल देखें तो उसको 72% ब्याज टैक्स के ऊपर देखें तो 56% उसका एडिशनल बन जाता है, ऐड करने में 72% ऐड करेंगे टैक्स का, तो टोटल उसको 141% प्लस 96% उसको टैक्स, इंटरेस्ट और पेनल्टी देनी पड़ेगी। अगर होम बायर अगर वो डिक्लेयर करता है, उसको यहाँ क्लेम कितना मिलेगा वो तो क्लियर है, जितना मिलेगा उसके ज्यादा उसको टैक्स डिपार्टमेंट को देनी है। तो ये हमें एक बार डिस्कस करना चाहिए और जरूर बायर्स को भी एजुकेट करना चाहिए कि भाई जो आप कर रहे हो आईपीसी वाले को क्लियरली बताना चाहिए कि भाई ये लायबिलिटी कंपनी की भी आएगी, आपकी भी आ रही है। ये मेरा क्वेश्चन थे मेरी तरफ से जो लिखा था मैं प्रेजेंटेशन में है। इसमें आपके कुछ क्वेश्चन हो, उस क्वेश्चन को हम ले सकते हैं। मनोज जी। या हाँ जी, हाँ जी। हाँ, देखिए I आज begin की my small presentation on this part, covering the company part as well as the buyer part, and we able to understand what will be the implication in the hand of the company as well as in the hand of the buyer through this transaction. Now, if you have any question on this, I'm glad to answer. आप अपनी शेयरिंग बंद कर दीजिए प्लीज। हाँ जी, शेयरिंग बंद कर अपनी देता हूँ। हाँ पे पीपीटी शेयरिंग। देखिए बेसिकली ये है कि वो अगर हम इसको आईबीसी एंगल से देखें तो ठीक है, कोर्ट ने हमारे को रिलीफ दे दिया। बट अगर हम इसको टैक्सेशन एंगल से भी देखें तो इट कैन कॉस्ट यू वेरी हेविली। यही एक पर्पस था आज की डेट में सब लोगों को बताने का। तो ये जैसे सर ने बताया अभी कि ये अगर 10 लाख रुपए कोई देता है तो उसके ऊपर 150% तक का पेनल्टी प्लस कॉस्ट टैक्सेशन की लायबिलिटी आ सकती है, या डिपेंडिंग ऑन द पीरियड एंड इंटरेस्ट आ सकती है। प्लस इट हैज अदर रिप्रिकॉशंस आल्सो एज फार एज सीडी इनकम इज कंसर्न, कि ES7 यूज कर रहा है या क्या कैसे कर रहा है, वो एक अलग इशू है उसके लिए। तो कहने का मतलब ये है कि जब भी कोई इस तरह की कैश ट्रांजेक्शन हो तो होम बायर्स को ये रिप्रिकॉशंस का बता के तभी ही करना चाहिए, कि यानी ही शुड बी एजुकेटेड, नंबर वन थिंग। नंबर टू थिंग कि अब इसको आप सीओसी में कैसे डिस्कस करोगे, ये भी एक यानी कि बट इट शुड बी डिस्कस्ड, मे बी नॉट एट सच अ लेंथ, बट इट शुड बी डिस्कस्ड दैट टैक्सेशन के अंदर इसके काफी इम्प्लीकेशंस आ सकते हैं इस तरह की ट्रांजैक्शंस को एक्सेप्ट करने के लिए या करने के लिए। अब बायर जो होगा वो मैंने बेसिकली देखा है 2-3 कारणों से ये पैसे कैश में देता है। एक तो कारण ये होता है कि यानी कि ही हैज टू यू नो जो अपनी जो भी उसकी नंबर 2 की अर्निंग होती है उसको इन्वेस्ट करना होता है, तो वो कहता है कि चलो कैश में दे दो। दूसरा कारण ये होता है कि हमेशा स्टैम्प ड्यूटी एप्लीकेबल है, जैसे दिल्ली में 8% है या 6% है, तो स्टैम्प ड्यूटी का भी जितना हमारा व्हाइट का एलिमेंट कम हो, डेफिनेटली इट हैज टू इट इज नॉट रिक्वायर्ड टू बी बिलो सर्कल रेट। तो ये उस चक्कर के अंदर भी कई बार ये बंदा कह देता है कि मैं कैश से दूं। अब इसमें तीसरा इशू ये आता है कि चलिए मान लीजिए उसका एक्सप्लेनेबल सोर्स है, उसने बैंक से विड्रॉ करके कैश दे दिया, जो उसकी बैंक के अंदर सैलरीज वगैरह या अदर चीजें वगैरह आ रही थी, जिसके अगेंस्ट उसने टैक्स वगैरह पे करा था। बट इवन देन यू नो 269 SS के अंदर ये 2 लाख से ऊपर जो सर ने भी बताया आप कैश पेमेंट नहीं कर सकते, ही गेट कॉट देयर इन। तो कहने का मतलब ये है कि it's a very tedious call which has to be taken, because as an IRP RP आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि आप हर चीज को गाइड करो। होम बायर भी होता है, जैसे मैं एक पर्टिकुलर केस के अंदर AR हूँ, तो होम बायर मेरे को कहता है कि ये मेरा नाम इन्होंने चेंज कर दिया, आप तो हमारे वकील हो जी।
आप हमारे को बताओ हमने क्या करना है, कैसे करना है, क्या एक्शन लेना है, क्या करना है। और मैंने कहा भाई साहब मैं आपका वकील नहीं, ये आ रहा हूँ। बट इन एनी केस दैट इज लव एंड अफेक्शन फ्रॉम देयर पार्ट। सिमिलर सिचुएशन मस्ट बी हैपनिंग विद यू ऑल ऑफ पीपल आल्सो। अब मैं इसके लिए एक सब लोगों के लिए एक यानी कि खोलता हूँ डिस्कशन के लिए। शिवनंदन जी आप भी कुछ कह रहे थे, और अविनाश माटा जी भी यहाँ पे हैं, who is also very close friend of us and taxation expert also. Welcome अविनाश जी, आप शुरू से ही थे, I was seeing you, लेकिन आपने वीडियो ऑन पहले करा होता तो हम आपको और अच्छी तरह से वेलकम शुरू में ही नहीं, करते। मैं एक्चुअली सोच उसमें डिस्टॉर्शंस आ रही थी थोड़ी सी ना उस टाइम नेटवर्क की। It's a pleasure always to hear you people. My interest is always academic on IBC. Taxation bhi, I'm just a learner and student only. Only issue, see, 269 SS also, it implicates the person who is accepting the deposit, not the person who pays. So जैसे आप कह रहे थे किसी ने बैंक से पैसा निकाल के दिया, which is all tax paid money. So to that extent, that home buyer shall not be at peril to my understanding. So that's perfectly fine. Only the recipient, even 269 ST also is implicating the recipient, not the person who is paying. So these are two issues. Issues both hai. Let us hear from Mr. Sharma. Maybe that we can take it further. इस पॉइंट पे मटा जी, अगर एसएस तो नहीं है, एसटी अगर कंपनी रीपे उसको कर दे कैश, again this will be a problem from the buyer point of view. Exactly. Yeah, I agree. There is STS and ST, both are there, both provisions are there. But there's Recipient the and both issue. are. No, I do agree. See, in these kind of the companies which go into CIRP process, it is already in limbo. That real estate project is already in a limbo. So there is no chance that the promoter is going to repay money in cash. So to that extent, yeah. So that is what I want to say. Even though cash has been withdrawn and one-to-one entry can be correlate, I have again a doubt. We have, the peers have experienced, seen so many clients where just cash has been received and they have handed over. There are very, very rare chances there, which may be correlated direct to direct transaction. The money has been withdrawn and they have been paid. Normally they are doing check, giving a check to someone else, or they may withdraw some another account, or may have managed some loan, cash loan, etc. Unless there is agricultural link, that maybe they have a good chance to defend themselves. As resolution professionals, we come through two kinds of cases. One case is that you have booked a flat, let's say for 1 crore rupees, and you have paid partially by check, partially by cash. The second case is that the flat's actual cost is 1 crore 50 lakhs. But with the developer, you have agreed that I will pay you 50 lakhs cash and only 1 lakh check, 1 crore check. And when the company goes into bankruptcy, he even comes to say that I have that paid that 50 lakhs cash also. So these kind of problems do arise. I think that Chennai court judgment is going to create a big problem, though not from taxation angle, but from the angles from RP, because when we get the claim, 90% times we have no books of accounts. And we examine the claims based on what the claimant submits. Our plans are approved. In my cases, the plans are approved and there are no books of accounts till date. This becomes one major issue in the whole system. So this is a very, very controversial situation. My only one question to my friends, because you are all from fraternity, what is our responsibility if somebody comes to me कि मैंने 2 crore रुपया cash दिया था? I refuse to admit his claim. As a professional, do I have any responsibility of reporting it to any authority? कि मेरे knowledge में 2 crore का cash claim आया है, promoter ने receipt दी है. Because when we do our audits and other works, and if we find any such transactions, as a chartered accountant, we are responsible to report it to the authorities. My question is that as CAs, if I get a claim, I don't admit it. I have similar situation जहाँ people have said मैंने सिर्फ 2 crore cash दिया हुआ है. What is my duty as a chartered accountant?
So I think Mr. Sharma is a PMLA. critical He is question. talking more about the PMLA duties which has been casted now. दोनों चीजें हैं सर, देखिए बताइए मनोज जी, बहुत दोनों चीजें देखिए, ऐसा है, let us think the irony of the home buyer, correct? So to that extent, you also saluted the Chennai bench. So it's a wonderful order of the Chennai bench, which is respectfully should be accepted by all the IPs. Reason being, already they are the sufferers. Home buyers are the sufferer. Now coming to Mr. Sharma's question of reporting. Yes, definitely PMLA will be invoked, and to that extent, all 66 application, all 43, 44, every damn thing will come into play in IBC as well as PMLA reporting should be done. That is where the IP shall be saved. Otherwise, he'll again see, it is a double-edged sword. Accepting is a problem, non-accepting is a bigger problem. Then the regulator is there after your life. IBI डंडा लेके घूमता है. So that way we need to be careful. अविनाश जी, मेरे को पक्का तो याद नहीं है, लेकिन आईपीएस को ना पीएमएलए से शायद अलग रखा गया है. सीएस आर देयर, बट आईपीएस को उन्होंने डेफिनेशन में से शायद अलग रखा गया है. तो एज एन आईपी शायद हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी डेजिग्नेटेड अथॉरिटी को शायद we can check it out, because what I vividly remember, IP is kept out of this thing there, and my other friends can also share. And you see, in all such cases, there is one major infringement, that all other payments, when you make, you deduct 1% TDS. Suppose you are giving a check of 1 lakh rupees, you deduct 1% TDS and give to the builder only 99%. So in these cash cases, nobody has deducted that 1%. So Baldev ji, another angle to that, TDS, yes, compliance of TDS, again, wonderful. That 50 lakh से ऊपर है a buyer responsibility. It's again a buyer responsibility to deduct the tax TDS. Yes, correct, yes. Correct. Non-compliance. That is also rightly said, Mr. Sharma ji. This is also one of the additional liabilities there on the buyer, which he has not discharged it at the time of it. इसमें एक बड़ा इंटरेस्टिंग सी बात बताता हूँ आपको. मैं द्वारका में रहता हूँ, तो यहाँ पे ना हाउसिंग सोसाइटीज हैं. तो हाउसिंग सोसाइटीज में जो ये बिल्डर वाली जो होती हैं, ये बड़े डोमिनेट करते हैं. तो इन्होंने ये कहते हैं कि म्यूचुअलिटी का कंसेप्ट ला के बीच में दे से कि आपको टीडीएस नहीं डिटेक्ट करना एज फार एज पेमेंट टू असेस कंसर्न. वो चांस की बात है कि मेरे पास उनकी कुछ टीडीएस के वहां पे सर्वे हो गया, उनका असेसमेंट का कोई काम चल रहा है. तो आई हैव अ कॉर्डिसी कि ये इशू होम बायर्स के अगेंस्ट ये कंसर्न ऑफिसर ना उठा दे, बिकॉज अराउंड 500 बायर्स आर देयर. टोटल पेमेंट 500 करोड़ के आसपास की हुई है. इनमें से मैं भी एक बायर हूँ. मैंने तो रो पिट के टीडीएस सारा उसका काट के दिया उसको. लड़ा बुरी तरह से मेरे से, वो नहीं काट सकते, म्यूचुअलिटी कंसेप्ट है ये वो. तो बल्देव जी, म्यूचुअलिटी कंसेप्ट के केस में, सिंस यू हैव आल्सो डेल्ट इन कोऑपरेटिव सोसाइटी, आर टीडीएस रिक्वायर्ड टू बी डिटेक्टेड और नॉट? You see the provision where is giving exemptions to that, even though they say that it says the income cannot be taxed if you are earned from yourself. That is another issue. Liability of discharging is not yourself paying; it is a contractor is also involved. You are making a payment to them also. So this all liabilities there still is there in the liability of payment. In my understanding, also this TDS liability is still there. Still there. No, okay. No. See, just let us go back again. The cooperative society of which I am a member, they are building my flat. Okay. So do you mean to say that when I am making payment for building my own flat, because again, coming back to the mutuality, I mean, that is one thing that should be seriously studied again. Again, you see, you have to go to the department to get its 197 order. It is a better than you have to save. Otherwise, it will be a litigation. Yeah, no doubt. Correct. Otherwise, litigation is all used. Department not accepting this. Very clearly. एग्जैक्टली बलदेव जी, बिल्कुल. डिपार्टमेंट में भी एप्लेंट स्टेज पे आके अविनाश जी हमारे को कुछ बेनिफिट मिल जाए म्यूचुअलिटी कंसेप्ट के ऊपर आईटीआईटी लेवल पे, बट डिपार्टमेंट ऑन द फेस ऑफ इट असेसमेंट के टाइम पे नहीं छोड़ेगा. और ये विडंबना हर होम बायर के साथ है जिसने कोऑपरेटिव सोसाइटी के अंदर इन्वेस्ट करा हुआ है. बिकॉज ऑफ एनी रीजन या भूल जाते हैं या पैसे नहीं जमा कराते. पहले 50 लाख से कम का फ्लैट होता था, कुछ फर्क नहीं पड़ता था. अब तो सारे के सारे फ्लैट काफी हाई प्राइस के होते हैं. चलिए, दैट वाज एनलाइटनमेंट, गुड एनलाइटनमेंट फ्रॉम अविनाश जी एंड बलदेव जी आल्सो.
अब शिवनंदन जी अब कहने का मतलब ये है, हमारे भाइयों को आप आईपी जितने भी हैं उनको क्या कहते हो आप कि हम कैश को एक्सेप्ट करें? नंबर 1 बात। नंबर 2 बात, उसकी रिपोर्टिंग करें या ना करें? नंबर 3 बात, वार्डन ट्रांसैक्शन तो उस कैश जो हमारे को नहीं मिला सीडी से जो उसके डायरेक्टर से, वो तो खैर डलेगी, इसमें तो कोई डिस्प्यूट वाली बात नहीं है। So as a matter of this guidelines, what you suggest being our senior IP? Sir, whatever can be traced into books of accounts, you can accept it. You can say that there are non-compliance of Income Tax Act, which can come in any manner you can report, but any entry which is not traceable into books of accounts, you should not admit. Let him go to the adjudicating authority, file a case against you. You get an order, then you will see what you want. So you should not admit any amount which is not tell him मेरे ऊपर case file कर दो यार 60 subsection 5. I think for that we I'm need not to delve a little bit more into it. चलिए, एक NCLT चेन्नई बेंच ने फेवरेबल जजमेंट दे दी. हम लोग NCLT की जो अनफेवरेबल जजमेंट्स हैं on this account, that we can also take it as our basis for rejection of his payment when it is not reflected in the books of account. चलिए, anyone else would like to say anything, or should I close the meeting? I would only like to make one small comment that I had discussed this matter with Makhija ji after the judgment immediately. He said this will not hold water. Chennai bench judgment will not be acceptable by any other tribunal. जी एनक्लैड की जजमेंट अगर कुछ आप दे पाए साइटेशंस, आई विल बी ग्रेटफुल. दे देंगे, जस्ट मिस्ड आउट इनिशियल पार्ट. हां, आप बेसिक ग्रुप में डाल दीजिएगा. हाँ जी, नहीं, बेसिकली हमने उसको अभी डिस्कस नहीं करा. मैंने कहा अगर हम उस चीज को एनक्लैड की जो कॉन्ट्ररी जजमेंट्स हैं, अगर हम उनको इस समय डिस्कस कर लेंगे तो फिर हमारी जो डिस्कशन है उसकी एक फीका बना जाएगा. बट कॉन्ट्ररी जजमेंट्स आर देयर. इनफैक्ट यही एक जजमेंट है जो इस तरह की बात करती है. इसके अलावा बाकी सब जजमेंट्स अगेंस्ट ही है. वो कहते हैं कि किताबों से नहीं मिलता तो हम नहीं मानते इस बात को. Anyone else would like to add anything? Mr. Suraj Prakash ji or anyone else? Please welcome. If I am permitted, I just like to say that if some claim has been made by a flat buyer that I have paid this much amount in cash, it is not reflecting in the books of accounts of the company. Whether that receipt which has been purportedly issued by the CD or the management of the CD, whether that is genuine or forged, how the RP will come to know about that? Because number one, it is not figuring in the books of accounts. Number two, it is not admitted by the management or the CD that this amount has been received. On the other hand, there is a claim that this amount has been paid to the CD or the management of the CD. So how RP will come to the conclusion whether this receipt purportedly issued by the management or the company is a genuine receipt or is a forged receipt? How this issue will be determined by the RP? Because there is no... जी का कहने का मतलब यह है कि बोनाफाइड हम इसकी कैसे डिटरमाइन करेंगे? देखिए, तो जी बहुत प्रॉब्लम्स आती है. मेरे को कम से कम 5 मंत्रियों ने बुला लिया कि ये पार्टी हमारे पास आई है, इसने कैश दिया है, आप इसको एंटरटेन करो. एंड आई वाज काइंड ऑफ हेल्ड एज ए होस्टेज और काइंड ऑफ थ्रेटन्ड कि आप एडमिट नहीं करोगे तो. एंड आई टोल्ड देम कि यू आर थ्रेटनिंग ए कोर्ट ऑफिसर एंड आई विल बी इमीडिएटली राइटिंग टू PMO कि आपका मंत्रालय छीन लेना चाहिए. You see, we are no, but what about my question which I have raised, whether that देखिए, बोनाफाइडी जो है या सूरज जी, आपकी जो बोनाफाइडी है ये तो प्रूव करनी पड़ेगी. अगर जैसे इस पर्टिकुलर केस के अंदर जो चेन्नई बेंच की जजमेंट थी, इसके अंदर चांस की बात है कि उन्होंने जो रसीद दी थी उसमें चेक की पेमेंट भी लिखी हुई थी, कैश की पेमेंट भी लिखी हुई थी. तो इसकी तो बोनाफाइडी ये प्रूव हो गई कि उन्होंने कैश दिया है और कोर्ट ने इस बात को मान भी लिया. अब सिचुएशन एक ये भी आ सकती है जिसमें सिर्फ कैश की रसीद हो,
चेक की सीधे लग हो, कैश के सीधे लग हो। अब कैश के सीधे लग हो और उसके ऊपर उसके एम्प्लॉय ने साइन करा है या नहीं करा, ये एक बड़ा सब्जेक्टिव सा मैटर हो जाता है और इस चीज को फैक्ट्स के बेस पे ही देखा जा सकता है कि वेदर इट शुड बी एक्सेप्टेड और नॉट, स्पेशली व्हेन द एंट्रीज हैज नॉट बीन मेड इन द बुक्स ऑफ अकाउंट्स। और इस पर्टिकुलर केस के अंदर तो उन्होंने एफिडेविट भी दिया था कि हमने जी कैश रिसीव करा है अदर देन द एप्लीकेंट। तो यू नो थिंग्स वर क्वाइट jugglery sort of things are there. So, but I buy. Where the receipt has been admitted, there is no issue at all. But in most of the cases, receipt by the CD will be denied because it has not been taken into consideration in the books of accounts of the company. So where it is denied, there either it should be subject to some handwriting experts examination, the signature on the receipt or rubber stamp of on the receipt or something. Otherwise, anybody can issue any receipt and sign it on behalf of the CD and make a claim on that basis. So I don't know what is going to be effective. According to the Income Tax Act and the provisions of other commercial law, any cash payment is void and illegal ab initio. They are entering into a cash agreement unless, like Baldev ji has said, 20,000 से ऊपर। अभी आप हॉस्पिटल में कोई बीमार हो जाता है, उसकी पेमेंट करने जाते हो तो 1,99,000 के ऊपर हॉस्पिटल पेमेंट नहीं लेता। He says, okay, get me either a credit card or any other check payment, because the provision of 2 lakh today is very strict. These transactions are actually void ab initio under the law. No, as Mr. Mata clarified very rightly, this restriction is on the recipient and not on the payer of the money. The person who is making this payment, there is no restriction under the Income Tax Act that he cannot pay in cash, but restriction is only on the recipient that he cannot receive the cash. But in the case of builders and developers, they are welcoming receipt of the cash. They are welcoming receipt of the cash. But you are saying very rightly, if you go to a hospital, the hospital is saying, I will not receive. हाँ बलदेव जी बताइए प्लीज। सूरज जी, मेरा कहना है कि रिस्ट्रिक्शन किसी पे नहीं है, ओनली पेनल्टी है। आप पैसा ले लीजिए, कोई मना थोड़ा कर रहा है, कोई रोक नहीं है, लॉ में कहीं रिस्ट्रिक्शन नहीं है, कॉन्ट्रैक्ट वाइड नहीं होने वाला, ओनली पेनल्टी इज इम्पोजेबल। But penalties also on the recipient, not on the avoid the cash transaction. This penalty is imposable, but money is not a restriction. It's not a void contract. The money can be received. There is no provision in the law, Income Tax Act, which says it is a void contract. It only says if received, penalty is imposable. And secondly, Mr. Anand talked about PMLA. So in my humble submission, PMLA is not applicable as far as evasion of income tax is concerned, because there is a first schedule annexed to the PMLA Act in which several enactments have been mentioned, in which Income Tax Act does not find mention. So if some income tax has been avoided, that does not come, that is not subject to the PMLA. In the PMLA, you are laundering the ill-gotten money, you are laundering the proceeds of crime, you have earned some money by committing some crime, which is called a proceeds of crime, and then you are laundering that money as a legal money. So that is the PMLA. But as far as my little knowledge goes, this is not, avoidance of income tax is not subject to PMLA Act. So it's not question of avoidance of tax. See what the promoter is doing. He is, making a malfeasance transaction with the company. So the money which was owned by the company has been siphoned off by this way. So probably that, to that extent, it may have repercussions there. Yes, it is not simple. To the subsequent transactions, yes, it may. You are right. You are right. But as far as payment by the home buyer, whether it is accounted for money, it is tax paid money, or non-accounted for money, that is not subject to PMLA, if I am not grossly incorrect. That's what I am saying. चलिए, we thought of Manoj ji, it is going to have company law and other acts implication. उनको भी किसी दिन एक सेशन में का, because the director pockets the money gets disqualified because he has taken money from the company and immediately thereafter, and there is an implication on the auditor through the institution, and if it is a large company, then NAFRA will, the latest penalty by NAFRA is 4.5 crore and 10 years debarment in Reliance matter.
You have seen that. तो अगर बड़ी कंपनी है तो ऑडिटर बिल्कुल ऑडिटर क्या करेगा सर? अभी इसका ये जो एग्रीमेंट हम इसमें देख रहे थे चेन्नई बेंच के अंदर जो एक एक्सेप्ट उन्होंने लगाया, now if the auditor is getting an agreement which states only 250,000 rupees, यहाँ पे तो 20 लाख वो दिखा रहा है, करेक्ट? So जो बायर को दिया वो एग्रीमेंट इज डिफरेंट देन व्हाट इज हैविंग इन द कंपनीज बुक्स ऑफ इन कंपनीज रिकॉर्ड. अगेन दिस इज एन इशू. तो ऑडिटर भी बोलेगा सर मेरे को तो एग्रीमेंट जो दिया वो ठीक था. रिकंसाइल होगा. So there are, going to be big Pandora box opening with this. There will be another angle whether it will be subject to criminal prosecution or not, whether under the Income Tax Act or under the Companies Act or any other act. If some huge amount of cash is being paid and it is being accepted by the developer, whether it will amount to some criminal offense or not. And you see, the best part is when you tell such claimant कि मेरे साथ थाने चलो, EOW चलो, online police complaint file करो, he refuses because it's a simple cheating 420 and related cheating sections. So he refuses to even file that. I was taken to a minister. मैंने अपने लैपटॉप को कहा आओ जरा ऑनलाइन कंप्लेंट फाइल करते हैं. मिनिस्टर सर नहीं इसको छोड़ दीजिए because you have been cheated and you don't want to file a police complaint. सिर्फ आरपी के माथे पे बंदूक रखी हुई है, आप क्लेम एडमिट करो. देखिए, if the person files an FIR, goes to the police station or the EOW, in that case there will be charge sheet, and in that charge sheet he will be cross-examined. Several questions will be put to him about the source of that money and other things. So it is very difficult to answer those questions, and it may so happen he may also be implicated as an accused in that prosecution. So that is the reason they avoid going to any law enforcement agency. That is also another reason. Sir, best part is जो शर्मा जी ने suggest किया, rejected and ask the claimant to go to the NCLT and file a complaint against me. Best part that is the best way. Let the adjudicating authority determine whether it was paid or whether it was not paid. That is the best part. But it was a very initial discussion. I think it can be continued in the subsequent sessions where several more factors can be taken into consideration. But it was a very knowledgeable session. So I'm thankful to the host who has arranged this session. So all my compliments to everybody, all the speakers. So I'm now much more wiser than I was half an hour or 1 hour ago. So I have learned several things which I did not learn in my 61 years career. So it was a very knowledgeable session. So my compliments to everybody. Yeah, this is our objective at our IPA, that we don't go for routine things and something like that. We always pick up some controversial issue and try to reach to the conclusion so that our IP brothers get educated and they get a they get a point how to act in totality of circumstances. In totality of circumstances, we come across, we reach to the conclusion that such claims should be rejected. Let him go to the NCLT, prove there, and on the basis of NCLT order, he may admit it. और अगर किसी मिनिस्टर का प्रेशर आ गया, कुछ आ गया, तो आप शिवनंदन जी को पकड़ लेना, ये PMO ऑफिस में आपको ले जाएंगे और उसका प्रेशर डिल्यूट कर देंगे. With this note, thank you very much. Thanks a lot, and we are really thankful to बलदेव जी, शिवनंदन जी, अविनाश जी एंड सूरज जी. ये सर देखिए, अब हम लोग सब लोग जो है ना बेसिकली CA बैकग्राउंड से हैं. जब CA बैकग्राउंड से हैं तो हमारे अंदर वो जो एक टैक्स का कह लो, ऑडिट का कह लो, या ऑडिट से रिलेटेड कुछ भी GST का कह लो, वो बीच हमारे अंदर हमेशा रहता है. और जब भी कोई हमारे को प्रॉब्लम आती है तो वो अपने आप हमारे मन से या दिल से बाहर आ जाता है और वी स्टार्ट कोरिलेटिंग दोस थिंग्स देयर. This is the best part being a CA and after that being an IP is there. चलिए, thank you very much. I may be an exception. I am not a CA. I am a company secretary. Finally, we should. But for the last over 2 decades, I have cash been we should not accept. That is the advocate. I am practicing only on criminal ultimate. side. So I may be an exception, but only for gaining more and more knowledge. I have come. नहीं, सूरज जी, आपकी बात ना थोड़ी सी दब गई थी, बीच में कुछ और बोल रहे थे. आप प्लीज दोबारा बताइए what you are telling about yourself. I'm saying I am an exception. I am not a chartered accountant. I am only a company secretary. I was in corporate sector for a few years. Thereafter, for the last over 2 decades, I have been practicing on criminal side as a lawyer, right from the district courts till the Supreme Court. So I am not at all a chartered accountant. That's what I want to say.
हमारी फ्रेटर्निटी में ना सीए एक कहने को नाम आता है, सीएमए, सीएस, एडवोकेट, ये सब हम उसको सीए की कैटेगरी में ले आते हैं। तो ये वो कहते हैं ना, वो कहने में जैसे वीर जी कह दिया, बड़ा भाई कह दिया, तो उसमें सब आ जाते हैं। तो यू आर पार्ट ऑफ आवर फ्रेटर्निटी। और विद दिस नोट आई थिंक we already crossed half an hour above. I take the permission to end the session. और इस बारी हमारे यहाँ पे EVM रेजोल्यूशन प्रोफेशनल्स ने पहली बारी ज्वाइन करा है, तो I would like to have a few good words for them. That is a very good IPE having 14 partners, and they thought to be contributing with us in the days to come. And उनके एक पार्टनर थे, उनकी all of a sudden COC आ गई, और हमारे भी ममता बेनानी जी, हमारी जो सेक्रेटरी, उनकी भी all of a sudden COC आ गई. They could not attend it. Despite that, we held this session, enlightened each other. We all being very, very senior, above 50 years of age. Despite that, I am feeling very happy कि हर किसी ने ये कहा कि इस सेशन के बाद मेरे को enlightenment हुआ, और मेरे को भी हुआ कि basically we got a solution ना. मैं भी इधर-उधर घूम-घाम रहा था कि मैं अपने होम बायर्स को क्या करूं, कैसे करूं. अब एक सोल्यूशन मिल गया, भैया तो NCLT चला जा, वहां से ले आ. और हो सकता है जब तक NCLT से ऑर्डर आए तब तक NCLT इस ऑर्डर को रिवर्स ही कर दे, और जो पहले उनके ऑर्डर चले जा रहे हैं उसके अकॉर्डिंगली चलता रहे. थैंक यू वेरी मच. Do keep joining us. रिवर्सल की प्रॉब्लम ये है कि RP is not allowed to file an appeal. So when the claim is admitted by and RP is directed, the complaint or a litigation will have to be initiated by a third party. I am not authorized. I will have to honor the honorable NCLT's order. Yeah, I am a court officer. Exactly. So I don't have to go for an appeal. कोई और पार्टी अपील में जाएगी तो ये NCLT में डिसाइड हो. तो और पार्टी का तो कोई इंटरेस्ट ही नहीं है, वो क्यों जाएगी अपील में? जाएगी. So that is the problem. So you must say sorry, go to the adjudicating authority. ऑर्डर मिलेगा तो मैं एडमिट कर लूंगा, मेरे को क्या फर्क. चलिए, ठीक है, ठीक है, ठीक है शिवनंदन जी. थैंक यू वेरी मच. थैंक्स अ लॉट. थैंक यू एवरीबॉडी. Especially to Baldev ji for sparing time for us. And with this note, I am ending the meeting. Thank you very much. Thank you.